tutorial of Ohm's law. In this tutorial, we are going to solve few questions regarding Ohm's law. In our class, we have already discussed in length what Ohm's law is, and I think it's quite simple because most of us already know what it is. In any case, let me summarize very quickly. So we know that when the current flows through a conducting material, for example, a wire, so this is wire, and if we apply a potential difference across this wire under this, so this is the negative terminal of the battery. So let me make like this. Okay, so this is, let's say, potential V. Under this potential, the charges will start flowing, for example, in this direction, and we say the current is flowing through the wire. And okay, so basically what is happening due to the application of the potential, the electrons will start moving in a conducting material in one direction. So, and then due to which we say a current is established. So this is the direction of electronic current, but conventionally we say the charges are moving like in this direction, right? So this is conventional current. Okay, so Ohm's law states that the applied potential difference is directly proportional to the current flowing through the material, and this law is valid for most of the materials, but in many cases, Ohm's law is not valid. For example, in case of filament bulb, when we apply potential difference, initially the applied potential and current are proportional, but after some time, this proportionality breaks, right? So uh, proportionality can be converted into equality using a constant of equality. In this case, we call it R, which is resistance of the material, and it depends on, for example, geometry, length, area, and other properties of the material. And we call this I. So this is the basic definition of Ohm's law, which we already know. But for example, we want to write this Ohm's law in form of current density rather than current. So just to remind you what current density is. So let's suppose this is the cross-sectional area of the wire. Let's call this A. And the current density J, which we represent by symbol J, is nothing other. So I'm making this region here the cross-sectional area of the wire, right? Let me make it more carefully. So this is the cross-sectional area, right? So what current density tells us that how much current is flowing through cross-sectional area of the wire, right? So this is I, right? And if we compare, just to give you a comparison, so if I draw the same, let's suppose I draw the same surface, only this time if I remove, for example, I say lesser current is flowing, then the current density in this case, J1, will be greater than current density in this case, J2, right? So current per, so this the definition of current density is current per unit area, which is perpendicular, right, to the flow of current. So this is current density, and now I want to write Ohm's law, this law, in form of current density. So it is, we know it is related, current density is related with current. So how we can write that? So basically I can say that the current density is proportional to the force which we
under which this force, so this is force per unit charge, the force which is experienced by a single charge. So current density will be proportional to the force applied per unit charge, right? If we apply larger force, larger we will have larger current density, and if we apply lesser force, and of course we will have lesser current density. Once again, in order to convert proportionality into equality, we use constant, and in this case we use uh, basically constant of proportionality is sigma. Sigma is conductivity. So sigma is conductivity of the material. Again, conductivity depends on the property of the material, right? For example, in case of iron, it will be different, let's say if, in case of gold. And okay, so when the current is flowing, it may experience, for example, couple of forces. We can write like which forces it can, for example, experience electric force per unit charge, and then it can experience, for instance, I can write like maybe magnetic force per unit charge. Okay, so if I open this up, the J will be equal to sigma Fe, electric force per unit charge, plus sigma Fp, magnetic force per unit charge, right? Okay, what is the Fe? Force per unit charge, right? So Fe, electric force per unit charge, will be Fe divided by Q. And what is Fe? Electric force, this is Q times E divided by Q is equal to E. So Fe is equal to electric field, right? So sigma, and in place of Fe, I will write E. And what will be the Fp? Magnetic force. In case of magnetic force, I can write Fp like Fb divided by Q. And what is Fp? That is Q V cross B, magnetic force experienced by a single charge, divided by Q. Q cancels with Q, and Fb will be V cross B. Okay, so I can write sigma V cross B. V is the velocity of the electrons, and B is the applied magnetic field. So this is the current density J. Okay. But in most of the cases, because the velocity is small, the charge's velocity is very small, right? In that case, we can actually ignore this term. So we can ignore due to the uh, small velocity. So we can, under the assumption that charges are flowing with small velocity, we can ignore this term, and we will have J is equal to sigma E. And this is the Ohm's law in current density form, right? Okay. And one can, of course, switch between one expression to the other. It's not that difficult. For example, maybe we can do it quickly here. So in case of a conductor, so for example, in this case, let's do it very quickly. So for example, let's suppose the length of this conductor is L, right? Okay, so what I need to do? I need to replace, so what I want to do is I want to convert this expression starting from here, and I want to go to this here. So first of all, you can see I need to convert R into sigma. So I need to look for a relation which can convert R into sigma. And I know that resistance of a material is proportional to the length of the material. So if we have longer conducting wire,
the resistance will be larger. Let me write maybe capital L, and it is inversely proportional to the area of the wire. So if we have cross-sectional area larger, the resistance will be smaller. And in order to convert proportionality into constant, we will write rho here. And rho is basically, rho is not charge density, instead rho is reciprocal of conductivity, which is called resistivity. Resistivity, right? So I can write then R like this, R 1 over sigma L over A. So I have R now in form of sigma. Then I need to change I into J. So let me write I in the same color. So I need to change I into J. How can I do that? So right here we have written our current density. So let me write maybe here. So J is basically di over dA, and di will be equal to J times dA, right? Okay, let me maybe write it more clearly. J times dA, and then I will integrate on both sides to get I. So the total current I will be equal to J is constant. I can take that out if it does not depend on the space. So I can take out of the integral, and so what else we have? We have integration over this area. So it will give me the area of the wire, in this case J A, this one. So I'm integrating here, like on this surface. So the integration of dA will give me the total surface area, right? A. Okay, so I have I in form of J. The last thing is I need to convert V in form of E. So I can also do that using the definition of basically potential, which is V E dot dl, and I integrate over it. So E, and if the direction of E and length are same, if we consider that, then I can take, and I also assume E is uniform, then integrating over the whole length give me the length of the wire. V is equal to EL. So I have everything now. So I replace now V, R, I in this expression. So let's replace. First of all, I replace V, which is EL. Then I will replace R, which is 1 over sigma L over A. Then I replace I, which is JA. Now, there are a few things which cancels out, like A cancels with A, L cancels with L, and we will have J. J here, sigma, take this towards this side, is equal to sigma times E. And in vector form, I can write like this, sigma E J, which you can see is the Ohm's law, right? So one can convert one form to the other. So in questions, maybe we are going to use both of these forms, depending upon our convenience. So let's start.
So let's start solving few questions of Ohm's law. Okay, so let's start with a simple question for warm-up exercise. Let me okay, how can I do that now? Snapshot here. Okay. So pause the video, try to solve this question by yourself. If not, then you can see the solutions, right? So what is the question? So we have a cylindrical resistor whose cross-sectional area, this one, is given A, and length L. So this is the length of the conductor. What else? And sigma is given, the conductivity, right? So sigma conductivity is given. Area is given. Here is the area. And here is the length. Okay, so if the potential is constant over each end, so we have applied a constant potential difference V. So there is, so if, for example, you can imagine like this. So we have connected this material with a battery of potential, let's say V, right? So what we need to find? What current flows? So we need to find I. So let's write both forms of Ohm's law. We can write V is equal to I R, and then the other form, J is equal to sigma, and in this case, let's write E. So we need to find current, right? How can we find current? In form of these parameters, which parameters? Cross-sectional area, length, conductivity, and potential. So can we write our current answer in these parameters? Okay, we know the current is equal to J dot dA, right? Because I have written this from this definition, di over dA perpendicular. From here, you can write I is equal to J dot dA. Okay, and in this case, because uniform potential is applied, so current is flowing like a constant current is flowing, I can take basically J out, and then I do integration over the area, right? And it will give me J times the cross-sectional area of the wire A, because this integration is done over this cross-sectional area of the wire, which will give me A. So I have found the answer, which is I is equal to J, right? But can we write our answer in this form, right? In these parameters. Using Ohm's law, actually, we can write I is equal to J times. Now I know J is equal to sigma E, right? So I can write sigma E, the magnitude. Let me write only the magnitude. Okay,
I have written J sigma E and then A, right? So I can write sigma A, and from here you can or see that from this equation I can write E is equal to V by L, right? For a uniform, this can be written for a uniform electric field. Then, because E field is uniform, I can write E is equal to V by L. V is potential, so V, and then the length of the wire, which is, let's write like L. So this is the answer. Okay, easy enough. Let's solve another question, another example of this. Okay. Again, pause the video and try to solve it by yourself. If not, then you can see the solution. We have covered this actually in the class, but in any case, let's do this again. So we have two cylinders, जिनके radii A or B हैं. A is the inner cylinder radius. If you can see, it is written here, and so maybe I can redraw if it is not that visible. So this is the radius A, and then we have a outer cylinder. जिसका radius B है, right? And the length of these cylinders are L. These two cylinders are separated by a by conductivity material of conductivity sigma. So what is happened, like you can imagine there is a inner cylinder and then there is outer cylinder, but in between, for example, we have material, this green material, which lies between these two cylinders, and the conductivity of this material is sigma. So if we apply a potential difference, for example, what we can do to imagine is, okay, if we apply like potential difference such that we can assume like a battery, so positive terminal ऐसे connect कर लें और negative inner cylinder के साथ. Due to this potential difference V, the currents will start flowing, right? Because these two cylinders are connected via conducting material, right? The question asks what current flows. So ये बताएं कि how much current is flowing through this wire, right? Once again, we can write our starting point will be writing I is equal to J dot dA, right? From the definition of current density, right? So we can write it here. So this is the current flowing through this. So this is the current we not want to know. So this is the current which is flowing between these two conductors, right? So हमें ये find करना है. How can, but we don't know J, right? J is not known. If J is known, then we can integrate and get our answer. But the problem is J का नहीं हमें पता. So in order to find J, we can use Ohm's law, which state J is equal to sigma E. Sigma is constant. Let's take that out. तो J is equal to sigma E. Sigma constant है, उसको बाहर ले जाते हैं. Let me write maybe. Okay. And E dot dA. And this is our current.
So only if I know E, I can find I, right? So how can I do that? So we know from Gauss's laws अगर आपको याद हो कि फ्लक्स जो था E dot dA, it is equal to charge divided by epsilon, right? This is the flux causes according to Gauss's law, right? So it means this will be equal to charge and divided by epsilon. This integral. So under the underlying integral is equal to charge divided by epsilon, and then there is sigma here. So we are almost done. So we have written our answer like I in form of sigma over sigma q over epsilon. The only thing remains is following. So we have arrived here like I is equal to sigma q over epsilon, sigma q over epsilon. So we are here, right? So if we can find q, then we can replace it. So हम हमें आंसर मिल जाएगा. So the rest of the calculation we are trying to find this q. हम q कैसे find कर सकते हैं वो हम करने जा रहे हैं, right? So let's start. Okay, so if we use Gauss's law, we state E dot dA is equal to Q over epsilon, right? And I want to find this Q. Okay, so how can I do that? So the problem here is we have two cylinders, one and the outer one, two. So what we can do is we can assume a Gaussian surface around the inner cylinder. और उसके लिए हम ये सॉल्व कर लेते हैं. तो we know in this case E and the direction of area elements are same, like this. Okay, then I can take E out. If you are confused, you can see your lecture notes of Gauss's law, and then I can write Q over epsilon. And what is the surface area for a cylinder? It is E is equal to 2 pi, this pink one. And let's suppose the radius of this is S and the length is L. So I can write the surface area as 2 pi S into L. So this is the answer of the integration, right? And it is equal to Q over epsilon. Okay, fantastic. And then I can write E as 1 over 2 pi epsilon, and on numerator I have Q, and I will divide by SL. So S, and then the length, and direction is in the S vector direction, radial direction में होगा E field. Okay, but our task was, remember, to find this Q. तो Q फाइंड करना है. और हम ये चाहते हैं बेसिकली Q को हम V की फॉर्म में फाइंड कर लें. अभी Q आ सकता है इन फॉर्म ऑफ E.
तो एक स्टेप और करते हैं, वी विल डू अनदर स्टेप टू फाइंड क्यू इन फॉर्म ऑफ वी, और फिर हम वहां पे पुट कर देंगे. So now I want to find, so if you see ये because we have applied a battery, तो इससे potential difference create होगा. So that potential difference let's call VA minus VB, and let's call this that V. ठीक है, VA minus VB, the potential difference of inner cylinder minus outer cylinder. तो वो मैं find करता हूँ. VA minus VB, according to the definition, it is minus integral of B to A E dot dO. And I know E is what E is, so minus, uh, let me change the limits. So if I change the limits A to B, this minus become positive, और फिर मैं लिखूंगा 1/2 E की जगह 1/2 pi epsilon Q over SL dr, right? So now I need to do the integration. Okay, so because E field and length are basically, I need to write ds. Why ds? Because जो electric field है उसकी direction इधर को है, right? और जो s vector है उसकी direction भी इधर को है, s. And length is not changing, which means length is constant. So s is changing. So that's why I have replaced dl with ds. So we are integrating basically from here in this direction, radial direction में कर रहे हैं. तो इसमें फिर I can take constants out, q over 2 pi epsilon l integration from a to b 1 over s ds. Alright. By definition va minus vb को हमने v का है, तो it will give like q over 2 pi epsilon l, और 1 over s की इंटीग्रेशन log s होगी. लिमिट्स हैं a to b, it will give q over 2 pi epsilon l log of b minus log of a, और log की properties यूज कर लें तो q over 2 pi epsilon l log of b over a. तो हमारे पास जो v आ गया फाइनली वो आया, लेट मी राइट बिकॉज q चाहिए ना हमें, इफ यू रिमेम्बर ये था हमारा आंसर. सो दिस वाज द आंसर, राइट? तो इसके बाद बाकी सारा कुछ हमने इसलिए किया है कि हम करंट को वोल्टेज की फॉर्म में लिखना चाह रहे थे. तो उससे करंट को वोल्टेज की फॉर्म में आई वांटेड टू राइट करंट इन फॉर्म ऑफ द वोल्टेज इंस्टेड ऑफ क्यू. तो पहले हमने ई फाइंड किया, ई से वी फाइंड किया, तो फिर हम क्यू को अब रिप्लेस करने जा रहे हैं. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इफ यू सी क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल वी, ये वाली साइड, डिवाइडेड बाय, नॉट डिवाइडेड बल्कि मल्टीप्लाई होगा 2 पाई एप्सिलॉन एल. तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 पाई एप्सिलॉन एल, एंड देन ये तो मल्टीप्लाई लॉग नीचे डिवाइड हो जाएगा, सो डिवाइडेड बाय log of b over a, and don't forget this v, हमें v भी लिखना है. So now I can replace this q in this equation जिससे मुझे करंट मिल जाएगा. So the current will be sigma over epsilon और q की ये सारी वैल्यू which I copy paste
Okay, so see if some things cancels out. Epsilon cancels with epsilon, and that's it. And we have finally our answer. I is equal to, we have 2 pi conductivity of the material sigma, 2 pi sigma L, 2 pi sigma L divided by log of B over A into B, right? So this is the answer. Now, if somebody asks, what is the resistance between these two conductors? Conductivity दी हुई है ना sigma, right? Resistance क्या होगी? Now, according to Ohm's law, V is equal to IR, right? V ये है, and this is I, which means ये जो कुछ हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 1/R है. So this is 1/R, right? Because ये R इधर इधर लेके जाएंगे तो V is equal to IR हो जाएगा. तो resistance जो होगी in this case, इसका reciprocal होगा, which is log of P over A, 2 pi conductivity of the material, and then length of the material. Is this the case? Yeah. So this is the answer. Okay. So let's do one more example. So this one is quite similar to what we have done. I would encourage you to pause the video and try to solve this example by yourself. So हम ये करते हैं, इस प्रॉब्लम को करते हैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे, इसकी फिगर को भी. Okay. So same question है, only this time the geometry is different, right? Instead of cylinders, अब हमारे पास सफियर्स है. तो क्वेश्चन क्या है, पॉज कर लें वीडियो को, ट्राई करें खुद सॉल्व करने की. Okay, so we have two concentric metal spherical shells of radii A और radii B respectively, right? और उसमें जो कंडक्टिविटी गिवन है मटेरियल्स के बीच में, वंस अगेन ये जो सिलेंडर है, सॉरी ये जो सफियर्स हैं, इस तरह से हैं कि इनके बीच में जो कंडक्टिव एक मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी सिग्मा है. तो पहले आपने ये फाइंड करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कोर्स अप्लाई किया हुआ है. करंट फाइंड करना है और फिर रेजिस्टेंस फाइंड करनी है. सो ऑल दीज स्टेप्स आर सेम, ये सारे स्टेप्स ऐसे ही होंगे जैसे अभी हमने किया. तो लेट मी कॉपी पेस्ट दिस थिंग. So nothing will change. Again, I will write current in form of current density, और फिर J में sigma E put किया, और again using Gauss's law I can write I sigma over Q और epsilon. अब Q को हमने लिखना है V की फॉर्म में. तो first thing is we need to find Q को V की फॉर्म में लिखना है. तो Q इधर लिखते हैं, ऐसे मैं बता दूं. So we want Q in form of V. तो बीच वाला स्टेप पहले करेंगे, Q को E की फॉर्म में लिखेंगे, फिर E से V लिखेंगे. So this is the thing we need to do, right? इससे फिर करंट वोल्टेज की फॉर्म में आ जाएगा. So first thing is how to write Q in form of E. So I can use basically Gauss's law, E dot dA Q over epsilon. Once again आपको याद होगा
इफ यू डू रिमेम्बर के ये जो फॉर एग्जांपल इनर शेल है उस पे चार्ज क्यू है, तो ये जो ग्रीन लाइन हम गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, राइट? इस सरफेस की वजह से इस सरफेस को यूज करते हुए दिस इज लाइक गॉसियन सरफेस। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं ड्यू टू अ स्फीयर ई बिकॉज यूनिफॉर्म है स्फीयर की। हम फिर स्फीयर का सरफेस एरिया लिखेंगे क्यू ओवर एप्सिलॉन। आप सरफेस एरिया स्फीयर का पुट करें, ई की वैल्यू जो होती है वो, तो सरफेस एरिया बेसिकली from here I can find E Q over epsilon multiplied by 1 over surface area of the sphere dA, right? और surface area जो होता है sphere का that is 4 pi r square, तो ये आंसर हो गया 1 over 4 pi epsilon Q over r square। and remember what this r is, इस सेंटर से इस ग्रीन गॉसियन सरफेस का रेडियस है और E की डायरेक्शन रेडियल होगी इन स्फीयर। सो Q से हमने E फाइंड कर लिया है। अब E से V फाइंड करेंगे और फिर हम पुट कर देंगे Q में। तो हाउ कैन आई फाइंड V? हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। सो इन दिस केस फॉर एग्जांपल इनर सरफेस पे पोटेंशियल VA है, आउटर पे VB है, तो डिफरेंस क्या होगा? VA माइनस VB, लेट्स कॉल दैट V। ठीक है, तो V को हम लिख लेते हैं दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। और याद करें कि पोटेंशियल की डेफिनेशन जो है ना वो A टू बी E डॉट DL है, ये होती है। सो दिस इज लाइक V, ये जो मैंने लिखा हुआ है इस फॉर्म में, ये लिखा हुआ है VB माइनस VA, ये ठीक है बाय डेफिनेशन। तो अगर मैंने VA माइनस VB लिखना है तो माइनस साइन वहां पे नीचे B आएगा, ऊपर A आएगा। ठीक है, और ये कैसे लिखा है मैंने? यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल E डॉट डी। अब आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स स्वैप कर लो, A टू B माइनस प्लस हो जाएगा और E की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर R स्क्वायर। और जो बेसिकली DL आएगा, E की डायरेक्शन भी रेडियल है स्फीयर की वजह से, E भी इस डायरेक्शन में है और हम इंटीग्रेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में करेंगे तो R की भी डायरेक्शन सेम है, मैंने ऐसे बना दी लेकिन सो E इज ऑल्सो लाइक इन दिस डायरेक्शन रेडियल में, R की भी सेम डायरेक्शन है। तो E डॉट डी एल विच इज डी आर, ये जीरो होगा इनके बीच में एंगल, सो आई कैन राइट बेसिकली डी आर हियर। तो अब मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। I will take Q over 4 pi epsilon common, A to be 1 over R square dr। इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो Q over 4 pi epsilon 1 over R square की इंटीग्रेशन होगी माइनस 1 over R A to B। ओके, लिमिट्स पुट करते हैं Q over 4 pi epsilon माइनस 1 over B और प्लस 1 over A हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज दिस माइनस साइन जब आप लिमिट पुट करोगे तो
सेकेंड टर्म प्लस हो जाएगी, तो थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 1/a - 1/b। चलो फाइनली ये हमारे पास वोल्टेज आ गया, राइट। तो फ्रॉम हियर आई कैन राइट q लाइक 4 पाई एप्सिलॉन v डिवाइडेड बाय 1/a - 1/b। इसको हम कॉपी करते हैं इस q को, और जो ये इक्वेशन लिखी हुई थी इसमें पेस्ट कर देंगे। तो I इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, और Q हमने अब निकाल लिया, तो Q को यहाँ पे लिखते हैं। सो दिस वाज Q। ओके, सो एप्सिलॉन कैंसल विद एप्सिलॉन and we get our answer. I is equal to 4 pi conductivity sigma divided by 1/a minus 1/b into v. Right, so part 1 is done, जिसमें हमें करंट फाइंड करना था, राइट। पार्ट 2 में रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो एज यू नो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ v इज इक्वल टू IR, लिख लें v। यहाँ पे ओहम्स लॉ में लिख रहा हूँ I, तो यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो 1/R के इक्वल होगा। इसका मतलब ये वाली टर्म का रेसिप्रोकल होगा, वो रेजिस्टेंस होगी, विच इज 1/a minus 1/b divided by 4 pi sigma. Okay, so this is our आंसर ऑफ पार्ट बी। ये पार्ट बी का आंसर हो गया, ये बी का आंसर है, ये ए का आंसर है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? प्रॉब्लम 7.2। कॉपी करते हैं 7.2 को, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिगर भी ले लेते हैं इसके साथ। ओके, पॉज करें वीडियो को, ट्राई करें सॉल्व खुद करने की, एंड देन यू कैन सी द सॉल्यूशन। ओके, सो अ कैपेसिटर, ये जो आपको फिगर में नजर आ रहा है यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है यहाँ पे। ओके, सो क्या हुआ है कैपेसिटर को? सो अ कैपेसिटर हैज बीन चार्ज टू पोटेंशियल वी नॉट, तो हमने इसको चार्ज कर दिया अप टू अ पोटेंशियल वी नॉट। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। फिर हम इसको रेजिस्टर से कनेक्ट कर लेते हैं। एज यू नो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। डिटरमिन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, हम हमने बताना है कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज रह गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम of qt. Determine the charge on the capacitor as a function of time. So first question ये है, आपने q find करना है as a function of time, और second ये है what is the current through the resistor I. So let's start with first one, हम q find करेंगे। So as we know कि इनिशियली अगर इस पे वोल्टेज वी नॉट है, और जब हम इसको रेजिस्टर से कनेक्ट करेंगे तो व्हाट हैपन्स कि यहाँ से चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे, राइट। और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज शुरू होना हो जाएगा, विच मीन्स जो लेट्स कॉल लाइक चार्ज में पी टी क्यू, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो चार्ज होगा, बिकॉज कैपेसिटर हम वी आर राइटिंग विद रिस्पेक्ट टू द कैपेसिटर, rate of change of charge in this case will be negative, right, less than 0 होना चाहिए, because ये जो rate of change है, charges जो हैं वो कम हो रहे हैं, right, and we know that this is
rate of change of charge with respect to time is called current, right? तो ये I होगा, और लेकिन हम यहाँ पे माइनस साइन था डालेंगे, और माइनस साइन इसलिए बिकॉज चार्ज जो है वो कैपेसिटर पे काम हो रहा है. So this is the equation. Now I need to find Q. Only if I can integrate this अगर because I is also a function of t, right? So in this form, it is difficult to integrate. I mean, what ideally I want is कि यहाँ भी अगर dependent variable q है तो यहाँ भी q हो, so that it becomes a first order differential equation जिसको मैं solve कर सकता हूँ. So I know जो charge होता है q is equal to वो cv के equal होता है, right? C is capacitance of the capacitor, right? Okay, and V is according to Ohm's law, V is equal to IR होता है. तो मैं यहाँ पे V is equal to I R लिख लेते हैं, right? तो यहाँ right side पे Q है, and I need I. So I as a function of time will be equal to Q. Q time का function होगा divided by CR या RC. R resistance भी constant है और capacitance भी capacitor की constant है. तो we will replace this I into this equation. तो इस I को replace करते हैं तो ये आ जाएगा आंसर Q over RC, and don't forget the negative sign, or d by dt, rate of change of charge with respect to time. अब मैं इसको integrate कर सकता हूँ using separation of variables. So dq by q, इस q को लेफ्ट साइड पे ले आए, and it is equal to dt over RC with a minus sign, और दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर लो. Okay, so if you integrate on both sides, ये 1 over x की फॉर्म है, तो I will get log of q. Let's use the same color. Log of q is equal to minus t over RC, और साथ जो constant of integration है, let's call that some constant of integration c naught. Okay, so I need q, तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं. So I will take exponential of both sides. इस तरफ भी एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, इस तरफ भी एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं. ठीक है जी, तो दोनों तरफ मैंने एक्सपोनेंशियल ले लिए. So these two cancels out, and I will get q of t is equal to exponential. Using the property of exponential, I can write exponential of minus t over RC, or exponential of c naught. C naught constant of integration है, I can write like this. Q of t, Q जो है function है time का, I can write this is a constant. Let's write like Q naught. Q naught क्या है, वो है e power c naught. ये हमने define किया, ठीक है. Constant है, it is exponential of minus t over RC. ठीक, हमने तो करंट फाइंड करना है. ओके, वी विश टू फाइंड Q of t, तो हमने Q of t फाइंड कर लिया, राइट. सो दिस इज द आंसर, बट व्हाट इज द करंट थ्रू द रेजिस्टर. अभी हमें करंट भी फाइंड करना है, राइट. तो करंट भी फाइंड कर लेते हैं. करंट दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम.
इधर डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा -1/RC, Q0 is constant, और एक्सपोनेंशियल ऑफ -T/RC आ जाएगा। दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव ले लिया। dq/dt होता है करंट I ऑफ t, और Q0 को मैं CV लिख देता हूँ क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है ना। तो आई कैन राइट Q0 इज इक्वल टू CV0 -1/RC CV0 exponential of -T/RC. Okay, what cancels? C cancels with C, and finally we have the answer. I as a function of time is equal to -V0/R exponential of -T/RC, where we can also write RC as time constant tau. तो इसको मैं -T/tau लिख सकता हूँ, right? So this is our current as a function of time in our circuit. So this is the answer. Okay. Let's do one more question, and maybe then we can end the tutorial. Let's see. Okay. पहले हम इसको देख लेते हैं। फिगर भी कॉपी कर लें। Okay. Pause the video and try this to solve by yourself. हमारे पास 2 मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 1 और 2। उसके बीच में एक कंडक्टिव मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी सिग्मा गिवन है। शो दैट द रेजिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, राइट? एंड एज यूजुअल अगर आपको शुरू वाले क्वेश्चंस याद हों तो वही वही हमने करना है, राइट? तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। प्रोसीजर हमारा वही है, इसमें भी वही है। ओके। सो ये हमने करंट लिखा इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, एंड फ्रॉम यूजिंग गॉसेस लॉ हमें पता है कि फर्स्ट हमने ओम्स लॉ यूज किया है यहाँ से यहाँ आते हुए। J इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर ले गए E डॉट डी ए, एंड वी नो दैट व्हाट इज E डॉट डी ए, इट इज Q ओवर एप्सिलॉन फ्रॉम गॉसेस लॉ। ये जो फ्लक्स है सरफेस से वो Q ओवर एप्सिलॉन के इक्वल है, और सिग्मा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हमने लिख लिया। हमें चाहिए इसमें, ठीक है, एप्सिलॉन भी आ रहा है, सिग्मा भी आ रहा है, एप्सिलॉन भी आ रहा है, सिग्मा भी आ रहा है, बट समहाउ वी नीड सी एंड आर एज वेल, राइट? इन दोनों का रिलेशन हमें चाहिए, तो व्हाट कैन वी डू? सो I can actually write this. I can actually write Q is equal to CV, right? From here, I can write Q is equal to C using Ohm's law. V is equal to IR, or I is equal to Q over RC, right? So अगर आप देखो, ये मैं क्यों यूज कर सकता हूँ these equations, because हमें जो कॉन्फ़िगरेशन है गिवन वो कैपेसिटर वाली गिवन है, right? So these are like two conducting material, although ये जो और हमने डिस्कस किए हुए हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट? और स्फेरिकल किए हुए हैं। तो जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो
हमें पता है कि इसमें चार्ज स्टोर हो जाता है, तो विच एक्ट लाइक अ कैपेसिटर। सो ये भी कॉन्फ़िगरेशन वही है, एक कंडक्टिंग मटेरियल ये, दिस टाइम दिस इज नॉट प्लेट बट सम वियर्ड रैंडम शेप, और इसके बीच में कोई कंडक्टिव मटेरियल है, राइट। सो हमें पता है कि फॉर केस ऑफ कैपेसिटर वी हैव Q is equal to CV which is valid। तो यूजिंग ओहम लॉ V is equal to IR, और यहाँ से I is equal to Q over RC आ जाएगा, तो ये आया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q over RC is equal to sigma over epsilon, sigma over epsilon times Q। So you can see Q cancels with Q, तो हमारे पास R किसके इक्वल आ जाएगा, R को आप दूसरी साइड पे लेके जाओ तो R इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, ये एप्सिलॉन ऊपर चला गया, यहाँ पे सिग्मा नीचे आ जाएगा, सिग्मा, और साथ कैपेसिटेंस आएगी सी। सो दिस इज द आंसर, नहीं यही हमें चाहिए था। ओके, इसका सेकंड पार्ट भी है, and this part is very much similar to what we have done uh, in the previous question। यहाँ पे जो हमने किया था यही कैलकुलेशन है, राइट। So I will not do the whole calculation, but I will just hint it out कि आप ये करोगे कैसे। तो suppose you connected a battery between 1 and 2 and charge them up। Suppose you connected a battery between 1 and 2 and charge them up to a potential V naught। ठीक है, बैटरी को आपने V naught चार्ज कर दिया है। If you then disconnect the battery, the charge will gradually leak off। तो चार्ज इसमें से चला जाएगा। शो दैट, आपने ये शो करना है, राइट। तो इस केस में भी जो कैलकुलेशन होगी एज आई सेड यही होगी। तो वी विल फॉलो द सिमिलर कैलकुलेशन। तो अगर आप इसको मैं कॉपी कर लूँ, व्हाई इज दैट, बिकॉज इसमें भी अगर आप देखो कि आपने जो सपोज यू कनेक्टेड अ बैटरी, आपने ये बैटरी कनेक्ट किया और चार्ज कर दिया है कैपेसिटर को, ठीक है। अब आपने बैटरी हटा ली है और चार्ज कम होना शुरू हो गया है, तो ये लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नेगेटिव, राइट, विच इज इक्वल टू करंट। तो ये चार्ज कम शुरू हो गया, तो फिर हम वही इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हमने तो v फाइंड करना था, ये q है, तो हम q इज इक्वल टू सी वी से फाइंड कर सकते हैं ना, q इज इक्वल टू सी वी, और मुझे v फाइंड करना है ना, तो v इज इक्वल टू q बाई सी होगा, राइट। तो इसका मतलब मैं दोनों तरफ इसको अगर कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दूं तो ये पोटेंशियल बन जाएगा। सो दिस विल बिकम v of t is equal to v naught, some initial charge, exponential of minus t over rc। Is this the thing we want? Yes, minus t over rc, and rc is time constant which can be written like tau। तो ये ही हमें चाहिए था, v is equal to v naught exponential of minus t over tau। So if you see, we needed this answer। चलें, so the last question is coming up। I'm not going to solve this one, this is for you to solve। So this is, so इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सो ये क्वेश्चन वही है बेसिकली सिलेंडर्स वाला। एक इनर सिलेंडर है जिसका रेडियस ए है, एंड देन वी हैव ए आउटर सिलेंडर। और पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में ये था आउटर सिलेंडर ऑफ रेडियस बी। पहले क्वेश्चन में ये था कि इस पे
जो material conductivity material in between वो sigma constant है, but this time sigma depends on k over s. S क्या है? S ये distance है, इस side पे जो distance है ना वो s है. So as you increase s, conductivity decreases. ठीक है, तो ये है. और अब हमने resistance find करनी है R. So I am writing do yourself. So इसको try करें खुद से करने की. So if you have any questions or difficulties solving that, please don't hesitate to reach me out. Thank you.